Hello students, today we all have learned about the remaining topics of the chapter our environments. In the previous session we all have know what is ecosystem and types of ecosystem. Today we all have know about the components of ecosystem. Components of ecosystem. Components of ecosystem means what are found in ecosystem. Ecosystem में क्या क्या प्रेजेंट होता है. Then ecosystem composed of mainly two components. Number one, biotic components. Abiotic components and second one is the biotic components. The first, abiotic components. What are the abiotic components? Abiotic components क्या होते हैं? The non-living things which are present in ecosystem is known as abiotic components. Means हमारी इकोसिस्टम में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स. एग्जाम्पल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, rocks, etc. These are the various components of the abiotics. The abiotic components directly or indirectly affect the life of organism. Means जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वो बायोटिक को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. दे अफेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके वितरण में भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं. जैसे फ्लड्स है, साइक्लोन है, वैलीज है. दे अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. वेरियस एक्टिविटीज, that is flowering, seed formation, body morphology also affected by the abiotic factors. Okay, this is the abiotic factors of the ecosystem. Next,
बायोटिक फैक्टर्स, biotic factors the living parts of ecosystem is known as biotic factors means किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग्स हैं that is plant and animals is known as the biotic components of ecosystem. Biotic components of ecosystem. So then biotic component of ecosystem is differentiated in the various forms. Number one, producer, consumers, decomposers. Okay, the biotic components and biotic factors are biotic component differentiated into three forms. First the producer, second is the consumer, and third is the decomposers. Okay, so first the producers, we detail know about the producers. What are the producers? Producers क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोड्यूसर्स हैं? Those organisms who synthesize their own food, inorganic materials and water with the help of lights is known as producers. The producers, all green plants are known as producers. Some microbes, that is blue green algae and bacteria, also synthesize own foods. The producers are first organism whose capture light energy. First capture light energy. सबसे पहले जो एनर्जी को कैप्चर करता है वो कौन है? प्रोड्यूसर्स. The producers transform solar energy or light energy into chemical energy. प्रोड्यूसर क्या करते हैं? जो सोलर एनर्जी है या हम कह सकते हैं लाइट एनर्जी है, उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी. नेम ऑफ द एनी वन केमिकल एनर्जी? एटीपी. एटीपी is the form of chemical energy, adenosine triphosphate. GTP, UTP, various forms of chemical energies. So these are the producers. Completed. Examples of producers: all green plants, blue-green algae, and some microbes, bacteria. Next, the consumers. Consumers. What are the consumers?
कंज्यूमर को क्या कहते हैं? उपभोक्ता, जो उपभोग करे, किसी चीज को एटमॉस्फेयर से ले, वो कौन है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स आर द हेट्रोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स आर द हेट्रोट्रॉप्स, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज ओन फूड, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर्स। Consumers are differentiated into various forms: primary, secondary, tertiary, and quaternary. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, those organisms which directly depend on producers। ऐसे ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर हर्बीवोरस, दे आर हर्बीवोरस। एग्जाम्पल: रैबिट, काऊ, grasshopper, etc. Various examples. Secondary consumers, these are the first lines carnivores. They depend on primary consumer for their feed. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और अपने फीड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल: फ्रॉग। टर्सरी कंज्यूमर्स, these are the third line carnivores, second line carnivores, depend on the primary and secondary consumers for their feeds. Example: snakes. Quaternary consumers, those organisms which depend their food on the secondary and feed on the tertiary consumers are carnivores, third line carnivores. They indirectly depend on the primary consumers. Examples: tiger, peacock, etc. The quaternary consumers. So these are the consumers, various forms of consumers. Next, the decomposer. The decomposers are microbes and saprotrophs. They depend on dead and decaying material
for their feed depend on dead and decaying materials. They break down complex organic material in the simpler forms into simpler forms, or in other words they recycling the materials. ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में मटेरियल्स हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं सिंपलर फॉर्म में और उसकी रिसाइकलिंग करते हैं. एग्जाम्पल, some bacteria and fungi are the best examples of decomposer. So today the topic is completed, components of ecosystem, biotic and abiotic. You easily differentiate what is biotic component, what are the abiotic components.